Hi guys, good evening. Right now it's about 7:30 and आज है 23 फरवरी 2022। तो मार्केट की बात करते हैं और आज हम बहुत सारी बातें और भी डिस्कस करेंगे। और कल के लिए मैंने कुछ स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं, कुछ कैश के स्टॉक्स हैं, कुछ एफएनओ के स्टॉक्स हैं। तो मैं देखती हूँ कितने स्टॉक्स यहाँ पे देती हूँ, नहीं तो आपको लाइव मार्केट में दूंगी। एंड लाइव मार्केट में अगर आपको स्टॉक्स चाहिए तो यू प्लीज बी प्रेजेंट ऑन माई स्टॉक प्रो ऑफिशियल चैनल। ये मेरा चैनल है जहाँ पे मैं अर्ली मॉर्निंग आप लोगों को ट्रेड्स देती हूँ। और आज मैंने सुबह ट्रेड्स दिए थे, मेट्रोपोलिस 2075 के आसपास दिया था, एंड इट मेड अ हाई ऑफ 2144, राइट, वेरी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। देन आई हैड गिवन क्रॉम्पटन 397 के ऊपर दिया था, एंड क्रॉम्पटन ने हाई लगाया कुछ 408 और 409 का। कल मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया था डी मार्ट का, और आज इसने अपना फर्स्ट टारगेट को टच कर लिया है, इवन क्रॉस करके थोड़ा सा नीचे आ गया था, बट स्टिल 4130 के तो 4193 के आसपास है तब भी, राइट। तो बहुत थोड़े से स्टॉक्स देते हैं हम लोग, बहुत कोशिश यही करते हैं कि कुछ मिनिमल मुट्ठी भर आप लोगों को कुछ स्टॉक्स दें, और उससे आप लोग जैसे एक दो तीन एंड एक ये वेस्ट मनापुरम दिया था विच डिडंट गिव अ ब्रेकआउट, एंड वेस्ट लाइफ दिया था जिसने कि एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट तो दे दिया था आज, राइट। और प्रीमियम चैनल में मैंने दिया था ओबराय रियलिटी। इफ यू हैव अ लुक एट इट, तो दोनों स्टॉक्स जो मैंने दिए थे क्रॉम्पटन and Oberoi Reality are almost like the top gainers, right? Have a look at it. Oberoi and Crompton and Oberoi are both top gainers, right? तो आज हम बात करते हैं दो तीन चीजों की। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू नो, आई हैव गिवन IGL फ्यू वीक्स बैक, और उसके बाद से IGL नीचे चला गया है, राइट। ऐसे ही मैंने MGL भी दिया था। So it's not that the stock has corrected, whole market has corrected itself, right? And then you have to, uh, if you're buying stocks, if you're holding stocks, you should know the market scenario as well. और गैप अप ओपनिंग हुई थी मेरे देने के नेक्स्ट डे, गैप अप ओपनिंग हुई थी, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि गैप अप अगर कोई स्टॉक हो रहा है उसको आप इग्नोर कर दो, राइट। यू हैव टू बाय अ स्टॉक व्हिच ओपन्स बिलो एंड देन क्रॉसेस योर टारगेट, राइट। तो आईजीएल ने नेक्स्ट डे ही गैप अप ओपनिंग दी थी, और उसके बाद नीचे जा रहा है, और उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा नीचे जा रहा है। अब आपने लेट्स से मेरे कहने पे खरीद लिया, 411 पे खरीद लिया, और उसी दिन इसने 400 का लो लगा दिया, नेक्स्ट डे फिर नीचे चला गया, फिर नीचे चला गया, तो आप क्यों होल्ड कर रहे हो उसको? व्हाई डोंट यू एग्जिट? यू हैव टू हैव अ स्टॉप लॉस, इजंट इट? आप कोई स्टॉप लॉस नहीं रखोगे, कुछ नहीं करोगे, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू मेक मनी इन द मार्केट, राइट। आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, एक मार्केट सिनेरियो देखना पड़ेगा। इफ यू डोंट हैव कैपेसिटी टू होल्ड, एक्सिट इट, take a position again when you see the markets are fine. I have written on my telegram channel कि market is going to go down for next few days, और ये मैंने 18 जनवरी को लिख दिया था। आज हम खड़े हुए almost like 23rd of February and market has been just continuously going down, right? So when the market is down, no stock will give you a good breakout. So anyway, आपका पोजिशनल साइजिंग मैटर करता है। तो कई सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। वन इज योर मनी मैनेजमेंट, आप कैसे अपना मनी मैनेज कर रहे हो, कितना रिस्क ले सकते हो, कितना रिवॉर्ड ले रहे हो, कैसे अपनी, एंड देन योर ट्रेड मैनेजमेंट, आप ट्रेड को कैसे मैनेज कर रहे हो, एंड देन योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, आप कितना रिस्क ले रहे हो फॉर किस रिवॉर्ड के लिए। अगर आपका जो प्राइस से आपने बाय किया वो सस्टेन नहीं हो रहा है, तो एग्जिट योर ट्रेड, एंड मार्केट इज गोइंग डाउन, so don't hold such trades, right? And that is why अगर स्टॉक ले, अगर आई एम नॉट अ गॉड ऑफ द मार्केट, यू नो, कि मैंने बोला है तो वो स्टॉक ऊपर ही ऊपर जाएगा। मार्केट इज सुप्रीम, अगर मार्केट करेक्ट कर रहा है तो स्टॉक भी करेक्ट करेगा, राइट। Exit your positions and take an entry little at the lower levels, right? So I have some stocks for today, and see, you have to manage your trade, right? I don't know whether you have bought it or not, but you know at what price you've bought. You know what is your stop loss. Before you buy, you have to calculate your risk. What risk can you take? Let me just give you a little idea about risk. Let's say you believe, you have 1 lakh rupees, right? How much risk are you ready to take? According to me, 2% से ज़्यादा आपको risk नहीं लेना चाहिए, right? That means 2000 rupees का loss आप accept कर सकते हो, right?
If you are accepting 2000 loss, you have 1 lakh rupees या let's say 5000 का अपने maximum आप loss accept कर सकते हो, divided by 400. I'm going to take a rough number, right? Divided by 400, which is the price of the stock, you get about 250 stocks, right? You get 250 stocks. Now, what is the maximum loss that you've decided you will take? 5000 rupees, right? Out of this, divide this 5000 rupees by 250, right? So you will get to know how many points. If it goes down, you will have to exit. अगर 20 पॉइंट स्टॉक नीचे जाता है, आपको अपने ट्रेड को एग्जिट करना है, राइट? अगर आपने 410 पे लिया है और ये 390 पे जाता है, आपको एग्जिट करना है. यू हैव नो राइट टू होल्ड इट till 360, right? That is a rule you have to simply follow. This is called risk reward, right? You have to, it's not that ki kabhi stop niche nahi jayega. It may go down, right? But when it goes down, you have to exit. You have failed in your analysis. I failed in my analysis, and my failed analysis, you have decided to take trade means you have to exit. And every time I give you with the stop loss, and I'm 100% sure this is the place I must have given you the stop loss, right? So anyway, let me talk about the stocks that I'm expecting to give good return tomorrow. Before we go on to that, let's have a look at Nifty. Nifty has been a bit very, very volatile today, and very, very nervous, right? Like, I think if you notice, Nifty failed to open to cross its morning range, right? Whatever the 15 minutes candle that was formed today, Nifty failed to manage that, right? So 17219 is where it opened, and from there it just went down and down and down, right? And it closed around somewhere around 17054. So there was a huge nervousness in the market, right? Now, having said that, there are some stocks which did really well. Like, for example, reality stock. Like, have a look at, Oberoi Reality did pretty well, right? We entered somewhere here and it just kept on moving. Then DLF has done really well today, right? DLF has been just moving in the upper direction, right? Similarly, you had Sobha, we had Godrej Properties. All these stocks have really done well. So for tomorrow, I have some stocks. Let me give you the stocks for tomorrow. The first stock that I have on my radar is Wipro, right? A lot of you have been asking about Wipro, and Wipro looks very, very rock solid today, right? Where can we take an entry? 575 looks a good, decent point from where you can take an entry. Then LTTS, all the IT stocks are looking good, right? LTTS is also looking very good, right? The kind of doji, the inside bar, there is this big candle and then an inside candle. Above this, you will have a good breakout, right? So low of this green candle, right? Please mind the stop loss because you have to maintain it. 4230 is going to be a stop loss, and you're going to buy it above 4500, right? 250 points का stop loss है, और टारगेट जो है कम से कम 300 पॉइंट्स का यहाँ से जरूर आएगा. So that is LTTS. So Wipro, LTTS, and the next stop that I have on my radar is Coforge, right? Coforge ने एक बहुत जबरदस्त कल मूव दिया था और आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन थे, all similar. If you look into the Coforge, you look into Wipro, you look into LTTS, all the IT stocks had this similar formation. So going above this place, which is 4510, there will be a very, very good opportunity for the stock to move up, and your stop loss is going to be 4200 and your target could be 5000, right? So these are three four stocks. In एक और stock मैं add कर देती हूँ इसमें, Jubilant Food, right? Jubilant Food is also looking good to me, and all of them are bottomed out stock. So 3080 के ऊपर हम buy करेंगे. स्टॉप लॉस हमारा कुछ रहेगा 2950 का, और टारगेट हम इसमें जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेगा 3200 का, 3300 का. ये दो टारगेट मुझे दिखाई देते हैं. तो अगेन लेट मी रीइटरेट, the stocks that I have on my radar are Jubilant Food, Wipro, LTTS, and Coforge. 3 IT stocks and 1 food and beverage stock. So in case you want to follow me on Twitter, you can follow me on Twitter and follow me on Telegram, where I give the live trades and make money along with our team, watching my YouTube videos, right?
you can be definitely watching my YouTube videos, and you get to learn a lot about stock market analysis, right? This is the place with about 34.4 thousand subscribers. You can follow me here and learn about technical analysis. So with this, I'm signing off. All the best, guys. Stay tuned, stay connected, and share my video with others. And all the links will be provided in the description box, right? If you go to the description box, you'll be able to find all the links like Telegram, Twitter, Facebook, WhatsApp, website, all the link will be provided over here, right? So that's it for today. Take care. See you tomorrow. Bye bye. And join us for live trading tomorrow, right? We almost every day we conduct live trading sessions, right? So if you go here, you will be able to see that today also we conducted, yeah, this is for tomorrow, right? 2 hours ago. This is join us in the live market for live trading, right? So all the best and see you tomorrow in the live market. Bye bye.